everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? तो स्टेशन का भी एयरपोर्ट ही ज़्यादा लग रहा है. I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. So this is my gaon for you. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. After 17 hours of travel, we are finally here in Udupi. Udupi is my native place and it's been 5 years. 5 years के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ and अजिंक्य का तो first time है. What was your first experience seeing Udupi for the first time? Awesome weather. है ना, बहुत ही अच्छा वेदर है यार, बहुत अच्छा वेदर है और बहुत ही ज़्यादा सुकून एंड पीसफुल एनवायरनमेंट है. अभी तो जस्ट पहुँचे हैं हम लोग ने. कल रात को 10 बजे ट्रेन में हम लोग गए थे एंड टुडे मॉर्निंग आई थिंक 1-2 बज गए. वी हैड सम लंच एंड द फूड वाज सो फ्रिकिंग गुड. कोकोनट तेल में फ्राई किया हुआ मच्छी एंड द फूड इन जनरल टेस्ट अ लिटिल डिफरेंट ना फ्रॉम व्हाट वी हैड. लाइक यहाँ का खाना का टेस्ट ही अलग है और बहुत ही अच्छा है. सो या अभी हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप होके विल चेंज एंड आई विल कैच यू गाइस लेटर. अभी तो हम लोग जस्ट पहुंचे हैं. टुडे इज द फर्स्ट डे एंड वी आर गोना बी हियर फॉर अ वीक और हम लोग उडुपी एक्सप्लोर करने वाले हैं. ऑब्वियसली अजिंक्य हैज नेवर बीन हियर तो उसको भी हम लोग को सब दिखाना है. टेम्पल से लेके व्हाटएवर इज देयर ओवर हियर टू एक्सप्लोर वी आर गोना बी एक्सप्लोरिंग एंड वी आर गोना टेक यू गाइस अलोंग विद अस बिकॉज आई नो व्लॉग्स बहुत कम है एंड आई नो कि बहुत लोगों को पता नहीं है यहाँ पर आके एक्चुअली एक्सप्लोर करना क्या है. सो दिस व्लॉग इज गोना बी वेरी हेल्पफुल. सो Then there is a house. This is a garden place. Okay, that's the house. This is the property. चलो आगे. Okay. This is the first house. We're heading towards first house. Some beautiful flowers. Beautiful flowers. And it is filled with नारियल का झाड़. You Yes. see all coconut. Coconut water everywhere. So this is the traditional place where you wash clothes. ये I think साउथ में ये दिखेगा ही आप लोगों को. And this is the तंदूर area. I don't know what it is called. Chula house. Chula house. And this is our गाँव का well. Well. And this is our house. First house. वो वाला घर भी दिखाना है. Yes. I have to wear my chappal then. Wait. Please, ma'am. The well is here. Okay. The well is here. Okay. Let's go ahead. Come here. This way, ma'am. This way. So this is the first house, and that is the second. आळूचे पानं पण आहेत. खूप सारे आळूचे पानं. कुआ number 2. One number 2. That is a great कुआ. This is the second house. तुप्पा डोसा तूप वाला.
क्या लिया तूने? मसाला डोसा एंड बंस। कैसा लगा बंस? Good morning everybody, it's the next day and today we are at Dharmasthala. So कल हम लोगों ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, we were not feeling well, so we chilled and spent time with our family. And today it's a temple visit day, so the first stop is Dharmasthala. सुबह हम लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकले हैं, around 6 बजे we left and I think 2 hours का journey था and we have reached Dharmasthala. अभी धर्मस्थला explore करना है and then we'll go to सुब्रमण्यम. बहुत ही लंबा लाइन है, इट्स गोना टेक सम टाइम. We took the special queue, which was 200 rupees per head. Finally, the darshan is done. It took us like 4 to 5 hours. बहुत ही बड़ा लाइन था. आई थिंक इट्स मेनली बिकॉज आज संडे है और कल तो और भी ज़्यादा भीड़ रहेगी. बट फाइनली द दर्शन इज़ डन. राइट नाउ वी आर गोना हैव सम लंच बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लगी है एंड देन वी आर गोना हेड टू टेम्पल नंबर 2 दैट इज़ सुब्रमण्यम. सो वी टुक अ क्विक पिट स्टॉप एट अ महागणपति टेम्पल ऑन द वे. वी आर गोना विजिट दिस टेम्पल एज वेल. We have reached सुब्रमण्यम टेम्पल. होपफुली यहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना रहे, वैसे दिख तो नहीं रही है because we are tired. सुब्रमण्यम टेम्पल के भी दर्शन हो चुके हैं. जस्ट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन, हम लोगों ने एक प्राइवेट कार किया हुआ है एंड दैट कॉस्टेड अस 6,600, आई थिंक 6,500 अराउंड. एंड इट इज़ अ राउंड ट्रिप, सो टू एंड फ्रो अराउंड 100 to 150 किलोमीटर्स था. इट वॉज अ रियली लॉन्ग जर्नी. On the way we saw another मंदिर, this one जो हमें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा, so we thought let's check it out as well. Next day. Good morning everybody, this is day 3 in Udupi
एंड आज का दिन बहुत ही चिल एंड रिलैक्स होने वाला है. कल हम लोगों ने सुबह से लेके रात तक बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग कर लिया. आज थोड़े थक गए. सो वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ चिल पिल टुडे. मॉर्निंग में हम लोग रेस्ट करने वाले हैं एंड इवनिंग वी आर गोना गो टू मल्पे बीच विच इज़ लाइक 10 minutes अवे. एंड आई फील when people say Udupi, a lot of people only know about Malpe beach, but there are so many other beaches to explore and so many temples and a lot of places that I'm going to show in this video. But आज का दिन chill day है. Let's see हम लोग क्या क्या explore करेंगे. We started the day with some amazing नाश्ता, buns, गोली बजे, ये वो बहुत खाया. And I feel for Ajinkya, he has tried a lot of new breakfast items. And I think his favorite is buns, right? What else did you like? बहुत कुछ खाया क्योंकि. And what do you feel about the property, our house? Property तो मस्त है, एक नंबर. Did you feel relaxed in this trip? full relax, आराम. This is day 3. What do you feel? How are you feeling? Is it going too fast? Do you want more days over here? Yes, फटाफट खत्म हो रहे. फटाफट खत्म हो रहा है ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है. So चिल करेंगे, प्रॉपर्टी हमारी एंजॉय करेंगे एंड मलपे में मिलेंगे. टेकिंग अ वॉक डाउन. चलो बाय बाय, मिलते हैं मलपे में. It's 5 PM and now we are heading to Malpe beach. मौसम ऑलमोस्ट बारिश वाला हो गया. एक्चुअली थोड़ा थोड़ा बारिश आ भी चुका है. इट्स द परफेक्ट वेदर टू एंजॉय द बीच. आई डोंट रिमेंबर मैंने कल आपको बताया है कि नहीं कि हम लोग कैसे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कैसे करना है इन केस यू विजिट उडुपी एंड यू वांट टू स्पेंड लाइक अ वीक ओवर हियर. सो लॉन्ग ट्रैवल्स लाइक जैसे हम लोगों ने धर्मस्थला और वहाँ सब गए थे, वो अच्छा खासा किलोमीटर है, लाइक 150-200 किलोमीटर. फॉर दैट वी हायर्ड इनोवा कार. उसके सारे मैं कॉन्टैक्ट लिंक्स आपको दे दूँगी विच कॉस्टेड अस अराउंड 6,500 एंड इट वॉज अ लॉन्ग ट्रैवल. वी वॉन्टेड समथिंग विच इज़ मच मोर comfortable and could afford all of us. So that's what we did. And today we are going nearby like Malpe beach and we are going to be doing like beach hopping as well. For that we have 2 local one bike and 1 scooty that one of our local friends who are our friends and family have helped us with. So that's what we are using. One we will hire but we have 2 और बारिश भी हो रही है. So I think that's what we will do. But in case if you want to hire scooty, places are available to hire scooty. I'll put the links for that as well. Just contacts for everyone. And tomorrow again we'll be hiring an Omni car to go. I think in city ही हम लोग घूमने वाले हैं family places पे. Family जिनको हमें visit करना है वहीं पर हम लोग घूमने वाले हैं. So I think वहाँ पर Omni car is good enough and that will cost around 3,000 per day. So yeah, that's the travel plan. All the links will be in the description. You know, when you're in a place like Udupi, you enjoy the little things as well. Like waking up really early morning because the mornings over here are extremely beautiful. Also just taking a walk in a place with this nice fresh air. Living in city, that is something that you miss a lot. Eating food over here, buns, goli baje, so many items. काय रे, कुठे निघून गेलास? घर नाही माहित? घर नाही माहित? हॉर्न दिला मागून तू ऐकत.
So we have come to Malpe Sea Walk first. Malpe में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए. Malpe Sea Walk है, राइड्स है, बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ भी होते हैं यहाँ पर. बीच ऑफ कोर्स, लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्लीन बीच विद वाइट सैंड, जो मुंबई में तो आपको नहीं मिलेगा. अगेन प्लेसेस लाइक दीज आर नोन फॉर दैट बीचेस. बट यहाँ का एक मैं बोलूँगी कि इसका पानी इतना क्लीन है कि आपको अंडमान को टक्कर दे सकता है. राइट? यस, इतना क्लीन है. इवन गोवा से भी ज़्यादा मुझे यहाँ के बीचेस क्लीन लगते हैं, विच इज़ लाइक a plus point. Again, it's my hometown. It's our गाँव, our native place. And look at this. ये सब पहले नहीं था, ये सब अभी बनाया हुआ है, and we are so proud of it. A lot of things. Also, there is a Saint Mary's Island. I don't know whether you guys can see it or not. अभी बारिश की वजह से बंद है, but I think October side से start हो जाता है. There is nothing else. You just take a boat, go there, spend some time, come back. It's just a secluded island that you can enjoy. But the beach is amazing. अभी beach भी actually बंद है because बारिश का season है, high tides and all of that. But we enjoy the sea walk. And यहाँ पर एक कुर्सी भी दिया है. You can enjoy the view. That's the sea walk. This is a beautiful park that they have made. जा पोस्ट कर. रोक रही हो, मत आओ. ये बहुत धीरे आई. अंचनाल बका कुड़वंजी बका पनपा And that's it for today's video, guys. This is part 1 of my Udupi vlog series. Part 2 will be dropping soon. If you like this video, like, share, subscribe, and I'll see you guys in part 2. Bye. We had a dream, we were sipping whiskey neat. I used to flow the Bowery when I was high enough. Spider-Man's control and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that ledge.